Am I live? Yes, just in time. Match has just started. Hello, hello, hello. Good evening, everyone. Welcome to another late night reaction of the World Cup qualifiers. The first game for Thomas Tuchel in charge of England. That is the reason why I'm doing this because I really wanted to see how it's gonna go. Team sheets देख के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. I see that Miles Lewis Kelly, Declan Rice, they're all starting, but this could be a little bit concerning for me as well because I don't really want them to pick up any sort of injuries in the match. Phil Foden is starting for England. That's good news. Apparently he can't catch a break with Manchester City, पर England के लिए start कर रहा है. चलो, it seems like everything's working. और बताओ guys, what's up? Discord. Thanks for sharing the link so that I can update the team sheets. Argentina versus Uruguay भी चल रहा है. World Cup qualification, and is that going on right now? Yo, बेटा, welcome. क्या हाल? This is another stream जो मैंने last minute decide करा करने को. I just got up actually 12:30 बजे. मैंने setup भी नहीं करा था सही से, but I thought Thomas Tuchel का first game है for England, so we should try and do the stream. I really want to see how Thomas Tuchel is gonna set up England tactically. He's done so well for Chelsea. Can he do it for England? यही देखना है. And I think he's picked a very strong starting 11. शेयर द लिंक. हाँ, मैं वहीं से प्रिडिक्टेड लाइनअप्स हैं. ये फुटम वाला जो लिंक है वही है ना, इन द मैच लिंक्स.
ठीक है, मैं बस एक सेकंड में सेटअप कर रहा हूँ. I think Rashford only had a bad thing going for him in Manchester United. बाकी सब तो उसके लिए अच्छा ही चल रहा है. I mean, he's had a pretty good run for Aston Villa. He's looking different, like a different player for Aston Villa. So I'm not surprised that he is starting tonight. एक second. चलो, I think we're all set up. हाँ, अब charts लेते हैं. I don't know अगर आज और कोई आएगा, because this is extremely last minute. So let's just sit back, relax, enjoy the game, and have fun with it. So in the World Cup qualifiers group, I think England is going to be facing Albania, Latvia, and then Andorra. And Andorra they'll face in June. He isn't doing that good. It's just his Premier League team. इतनी strong है भी नहीं. Kala might be out for 2 to 3 weeks. Still assessment is going on. Great. What a news to wake up to. I mean, yesterday जब मेरे को यश ने बताया था कि it might not be very serious, I was still hopeful. पर after reading the news this morning and all the articles, तो ऐसा लग रहा है. And पता है क्या, this is such a weird thing that happens with Arsenal. I mean, we have so many defenders and now they're all getting injured. And now another one of our fullbacks, Miles Lewis Kelly, is at risk. But I am happy for him that he's gotten his first international cap. So really happy for him, but at the same time we really need our players fit. अभी आर्सेनल के कौन कौन से गेम्स आ रहे हैं, एक सेकंड में ज़रा चेक करता हूँ. तो Arsenal is going to be playing on April 2nd against Fulham, which is going to be a tough match. Then Arsenal are going to be playing on April 5th away to Everton. Won't be very easy. And then finally the big one, April 8th, Arsenal versus Real Madrid. And then April 17th, Real Madrid versus Arsenal. PR team इतनी strong नहीं है. If he assists a tap in, he will get 3 posts from ESPN.
कहा जा सकता है? I think Rashford didn't do himself any favors also, to be completely honest with you. I think Rashford, उसका फॉर्म चला था, आई मीन ही स्टार्टेड विथ ट्रमेंडस पोटेंशियल, तो उसने अपने जो इमेज है उसको बहुत हाई कर दी, एंड एकदम से जब उसके स्टैट्स नहीं मैच कर रहे थे तो वो जो टैबलॉइड्स हैं उसने उसको गिराना शुरू कर दिया, एंड दैट इज़ वेयर आई फील डिस्कोर्स बदलना शुरू हो गया उसके इमेज के बारे में, उसके गेम के बारे में, एंड दैट डेफिनेटली हैड एन इफेक्ट. अभी क्या है, आई फील दैट एट एस्टन विला ना, ही शुड प्ले लाइक ही हैज़ नथिंग टू लूज. He should play without pressure. I think Unai Emery is a good coach, very experienced coach, and he would have suggested the same for him. My first cup of coffee. 2nd April, 2nd April Fulham home, 5th April Everton away, and 8th April Madrid home. The first three games after international break. भाई was मेरी तो नज़र उसी पे, मैंने तो थंबनेल्स भी बना के रख दिए हैं for the Arsenal versus Madrid game. Everything is ready. It's just whenever I start thinking about that game, my heart starts pounding inside my chest, and I start getting extremely nervous, and then I'm like, just don't think about it right now. When the day comes, it comes. We'll figure it out then. Right now, I just don't want to think about it, because to be very honest, they're right. Everybody who's talking about Arsenal's prospects against Real Madrid, they're absolutely right in pointing out that when it comes to sheer quality, Real Madrid have depth, especially in the areas where we don't have. They have depth in attacking, and we don't have any attackers at this point in time. If Bukayo Saka comes back, it's going to be a huge plus, but he's coming straight back from injury, which is a little bit concerning for me, because will he be able to immediately step up to the plate? I mean, he's a world class player, ये तो सबको पता है, but against Real Madrid, coming back in your first game and playing Real Madrid in the Champions League quarterfinal, it's still a very daunting task, and it bothers me at night. And then of course it's the question of Mikel Merino. But then again, oh, hello, 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 bro, Pawan, what's up? Long time no see. Yes, yes, yes. I have been streaming. I mean, I've been streaming regularly, and I've been creating quite a lot of content football related, especially during this period where there's so much of football action going on. India versus Maldives अभी हुआ था, and आने वाले टाइम में India versus Bangladesh होने वाला है, where Hamza Chaudhary is going to be debuting for Bangladesh. So there's a lot of football related stuff going on in the world, as it always is. That's why we love the game, right? Football just keeps you going. And today, obviously, we're doing the stream because this is Thomas Tuchel's first game in charge of England. You, bro, watching your stream regularly but didn't comment. Oh, that's fine. Appreciate that you came and you watched the stream, saw the watch alongs and everything. Really do appreciate it. And it's really up to you, man. If you feel like dropping in a chat, having a chat with me or with any of the other boys, it's just like we're just friends sitting over here watching a football game together. So whatever you want to say, I mean, we sometimes we get a lot of weird chats also, and we just take it in stride. So it's all good. We're just, the basic vibe of this place is we're all a bunch of friends watching football together, talking. Sometimes we're talking shit, sometimes we're talking funny stuff, and sometimes we're just having fun. So yeah, that's what it is. And this is what I love to do. I always imagined this thing would be so hard, but because the footballing community is so gripped, I mean, they know what they want, and it's all us lads, so it becomes a lot more easier. Excuse me. Nothing, bro. Just hoping Arsenal to knock out Madrid from UCL. I mean,
I was just talking to Bitter about this. That whenever usually when I'm making content, I'm like, okay, I'm doing this, I'm doing that. But then suddenly my mind just gets distracted, and it gets distracted when I see that Real Madrid logo somewhere. And I'm like, that day is gonna come, guys. That day is gonna come. That night is gonna happen. The match is gonna take place, and someone's gonna lose. Uh, and but what I'm hoping for is, I really, really hope that Arsenal go through, and I hope that Arsenal go through comfortably, so that all the critics and everybody else, just shut up. Just shut up. I just hope that in this game, this is a big shut up match for Arsenal, that they can shut Real Madrid up and prove all the doubters, haters, and critics wrong. That is what I want. But it's not going to be easy. Whenever I was recently doing a La Liga stream where I saw Real Madrid playing against Villarreal, the game where Carlo Ancelotti was saying that we did not get enough break and we were exhausted. We still played in that match, and they still won. They were away to Villarreal and they still won. Here we go. Harry Kane can make it. 1-0 doesn't. So they have a very, very strong attacking side, and that is what is bothering me a little bit. Is it going to be offense versus defense, or are we going to have some attacks of our own? Although we got knocked out from UCL and the Carabao Cup. Yes, we were doing a live stream for that as well. We did not see the UCL game. देखा था क्या हमने? UCL game देखा था लिवरपूल का? PSG की हाँ देखा तो था. Yeah, we did PSG versus Liverpool. Yes, we did do that. And we also saw the Carabao Cup final, which was absolutely insane. I mean, the atmosphere over here amongst all of us was crazy. Everybody was jumping around. Liverpool fans were coming in. They were literally like, what is going on? I can't understand what's happening. I think Newcastle were out. Newcastle outplayed Liverpool in that game. So yeah, I mean, my lineup for the first leg of Arsenal versus Madrid is Raya, Timber at the left, Saliba, Gabriel, White, okay, Ben White, Odegaard, Rice, Partey, Martinelli, Merino centrally, and Trossard on the left. So we still don't really have any news on whether or not Bukayo Saka is going to show up for the first leg. I don't think so. If Arteta knock out Madrid, he has to be in the history books of football. Then again, on social media, people will start saying, oh, here's your We Beat Real Madrid trophy, just like they've been doing that We Beat Manchester City trophy and this and that. So people start making a lot of jokes. But I do agree that if Arsenal do manage to knock out Real Madrid in the quarterfinals, then we have a very strong shout of winning the Champions League in its whole. Because then we have PSG or Aston Villa, and then Barcelona is going to be crazy again. Barcelona are even better than Madrid at this point. Saka early April बोल रहे हैं. अरे हो तो गया early April. The game's on 8th. 4 तारीख को ले आओ उसको वापस. The delusion is setting in, guys. The delusion is setting in my brain. It's nestling. Oh, Miles Lewis Kelly has scored. My God, can you believe that? Miles Lewis Kelly has scored on his debut for England. What a moment this is for the Arsenal boy. My God, Miles Lewis Kelly has scored for England in his debut game. Wow, this hats off to the guy. Hats off to the guy. Hats off to the guy, man. What? Unbelievable. We don't need if Miles Lewis Kelly is playing like this and finishing like that, then
Absolutely insane. I have to change the score line. Sorry, guys. 1 second. Really happy for this boy, man. Really, really happy for him. Really happy for him. What a boy. 1 second. I'm opening my chat again. Saka early April बोल रहे हैं. If Saka is available, then thank you Trossard. Put him his original place, the bench. I think that's a little bit disrespectful. I feel that Trossard has his moments. Uh, so I think he will still have a role to play. I mean, this game is going to happen over two legs. Let's not be mistaken about that. And we're gonna need every single player we can get. ब्रो कुछ सीन है क्या स्ट्राइकर के बारे में सेस्को वगैरह से नाउ वगैरह see now how it is costing for Arsenal. Yes. So Arsenal's inability to have signed a striker over the summer and ineption to be able to sign a striker in the January transfer window has definitely had a massive impact in terms of chances created, in terms of goals scored both ways. We just cannot rely on set pieces each and every single time. Although I do appreciate कि हमने वहाँ से गोल निकालने मतलब हमने हर एक जगह से कहीं से गोल निचोड़ना शुरू करा है जब हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है, तो दैट इज़ समथिंग जो मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ. पर उसके अलावा अरे यार थोड़े पैसे ही खर्च कर देते. जॉश क्रॉन्की तो कह ही रहा है कि ले लो मेरे पैसे, ये लो डालो खरीदो प्लेयर. आंड्रिया बर्टा आ गया है अब. चलो उस टाइम पे शायद एडू वेडू के साथ थोड़ी सी डिस्क्रेपेंसी रही होगी, पर अब तो तुम्हारे पास है ना चांस. तो डेफिनेटली अब तो चलो जो हो गया सो हो गया, उसको अब बदला नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकते. पर आने वाले टाइम में आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आर्सेनल को कुछ करना है तो दे हैव टू साइन अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर. अभी इस टाइम में अलेक्जेंडर इसाक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट देन ऑफ कोर्स वी गोना बी competing विद लिवरपूल. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर परफॉर्मेंस दिस सीजन. अगर न्यू कासल भी क्वालिफाई कर जाती है चैम्पियंस लीग के लिए तो देर इज़ समथिंग टू बी सेट फॉर दैट. उसका प्राइस और बढ़ जाएगा. दे वुड नॉट वांट टू लूज देयर स्टार मैन व्हेन दे हैव बिन qualified for the Champions League. So there are many different metrics to be considered in this signing. And then of course there is the potential availability of Benjamin Sesko and Victor Gyökeres. एंड मैं आपको सही बताऊं तो चेल्सी भी पीछे पड़ जाएगी. देखना लास्ट मिनट पे चेल्सी भी पहुंच जाएगी वहां पर कि हाँ 100 मिलियन क्या, ये लो 150 मिलियन दे लो, ये लो 160 170. वो ऐसे पैसा वैसा फेंकना शुरू कर देंगे. एंड देन एवरीबडी एल्स विल बी लाइक व्हाट फीफा फेयर प्ले, कैन यू प्लीज get involved because this is ridiculous. Correcting you, Trossard used to have his moments. Currently Trossard is having old age moments. ये लिवरपूल और आर्सेनल के ओनर्स भाई भाई हैं क्या? मेरे नॉलेज से तो नहीं है. FSG इज़ व्हाट, फिडेलिटी स्पोर्ट्स ग्रुप, वो आई थिंक अलग है. एंड जो आर्सेनल के ओनर्स हैं वो क्रॉन्कीज हैं एंड उनका अलग स्पोर्टिंग ग्रुप है, क्रॉन्कीज स्पोर्ट्स समथिंग समथिंग. तो ये जो दोनों ये जो ग्रुप्स हैं ना, FSG एंड क्रॉन्की, ये सिर्फ आर्सेनल और लिवरपूल को नहीं ओन करते, ये बहुत सारी फुटबॉल टीम्स को ओन करते हैं. प्रीमियर लीग में नहीं, जैसे NFL है, NBA है, बेसबॉल है, ये उन टीम्स को भी ओन करते हैं. ये जो कार रेसिंग, जो नास्कार कार रेसिंग होती है, उन टीम्स को भी ओन करते हैं. तो ये इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल यही है, टीम्स को खरीदना. एंड बहुत ही मतलब अरबों वाला पैसा चाहिए होता है ऐसे बिजनेस में घुसने के लिए. तो ये उनका बिजनेस वो है. Bro, last night I watched few highlights of Sesko. What? एक सेकंड, वो सार्केज़म में बोल रहा है. ओह सॉरी, मैं ना बहुत सारी चीज़ें काफ़ी लिटरली ले लेता हूँ कभी कभी. तो मेरे को एक्सप्लेन कर देना अगर मैं अगर मैं अपनी ट्रेन पे निकल चुका हूँ तो. Bro, last night I watched few highlights of Sesko. What an amazing finishing. That tall striker. I wish for next season Liverpool sign करे. देखो लिवरपूल स्ट्राइकर तो ज़रूर साइन करेगी, देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड. पर सबसे पहले, जिससे पहले वो स्ट्राइकर साइन करे, आई थिंक लिवरपूल शुड ऑल्सो कंसिडर कि उनके जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जैसे कि वर्जिल वैन डाइक,
जैसे कि मो साला, इन प्लेयर्स को रिटेन करना उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जब इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर हो जाएं, उसके बाद दे कैन कंसिडर साइनिंग अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर लाइक बेंजामिन सेस्को, विक्टर जोकेरेस, जिसकी दे हैव कंप्लीट पावर टू बी एबल टू डू दैट। तो अभी जो न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि जो तीन मेन लिवरपूल प्लेयर्स हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर, वर्जिल वैन डाइक एंड मोहम्मद साला, ये सब आई थिंक छोड़ के जाने वाले हैं। पोटेंशियली छोड़ के, अगर ये तीन प्लेयर्स एक साथ एकदम निकल गए लिवरपूल क्लब से, तो कौन रह जाएगा लिवरपूल क्लब में? बहुत बड़ा डिप्लीशन आ जाएगा एंड आर्न स्लॉट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू फिगर आउट immediately. Rumors are floating around for VVD to PSG. Yeah, we have to write sarcasm from next time. पता नहीं भैया when we will compete with City financial power. देखो, अगर I might surprise you, right now the richest club in England is not Manchester City, it's actually Newcastle United. अगर आप in terms of spending power देखो, तो न्यूकासल यूनाइटेड इज द मोस्ट। अबे क्या कर रहा है ये? डैन बर्न, व्हाट वाज दैट? फ्रॉम अ ग्रेट मोमेंट टू एन ऑलमोस्ट हॉरिबल मोमेंट। Pickford was asking to grab the ball. Cross comes in. Dan Burn tries to clear. Pickford could have collected it, but Dan Burn decided not to take any risks. I think there was a little bit of a communication gap there. Dan Burn almost, Pickford wanted to catch it. He would have caught it, but it has gone out for a corner. Aslani is going to be taking that corner right now. चेक करके देखना बेटर, आई एम श्योर आई एम राइट. न्यूकासल यूनाइटेड इज द मोस्ट richest club in England right now in terms of spending power because of their new ownership. I think I'm right because मैंने पढ़ा था अभी and they have a massive नहीं, it's not handball. क्या करा है? Oh my god, Albania could have scored another corner. Very good question from Pawan. एक बात बताओ, लिवरपूल 3 मेन प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, वेजेस ज़्यादा हो जाएगा या न्यू प्लेयर्स का साइनिंग फी? अभी देखो वो तो बैलेंस आउट करना पड़ेगा। जैसे कि डार्विन नूनेज, आपको यू विल हैव टू लेट हिम गो, उसको जाना पड़ेगा। वहाँ से थोड़ा वेज रिलीसेस में फंड्स आएंगे। उसके बाद आपको एक दो और ट्रिमिंग तो करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ट्रिमिंग तो करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं से प्लेयर निकलेगा, कहीं ना कहीं से प्लेयर आएगा। आई मीन पैसा हवा में तो बनेगा नहीं। या तो कैश इंजेक्शन होएगा ओनर्स से, या फिर एंड अभी आप लोग प्रीमियर लीग भी जीतने वाले हो, तो क्योंकि आप लोग प्रीमियर लीग जीतने वाले हो, उसकी वजह से जो आपको कैश प्राइज मिलेगा जो कि इन एक्सेस ऑफ 200 मिलियन पाउंड्स होता है, तो मे बी यू कैन इन्वेस्ट दैट इन साइनिंग अ प्लेयर एंड हिज वेजेस। तो ये चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं, पर इतना आसान नहीं है। जैसे हम लोग कभी कभी फीफा मैनेजर खेलते हैं ना, वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें हमें लगता है हाँ इतना ही आसान है, इसको साइन कर लो, इसको साइन कर लो। बिल्कुल ऑपोजिट है, कंप्लीटली ऑपोजिट। इतना ज़्यादा पेपर वर्क होता है, इतनी सारी बातें करनी होती है, इसलिए ये लोग एजेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एजेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं ना, ये पेपर वर्क वाले प्रोसेस को बहुत जल्दी से क्लीन अप कर देते हैं। एंड हाँ, एजेंट्स की भी सैलरी अलग से देनी होती है। यूर राइट, न्यू कासल ओनर आर वर्थ $320 बिलियन। ज़रा सोचो कितना पैसा है। 303, अगर मेरे को $10 मिलियन मिल जाए ना आज, मुझे ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं 4 फ्लैट खरीद लूँगा और बाकी के पैसे से दुनिया घूमूंगा। लिटरली इतना ज़्यादा, $10 मिलियन, 10 मिलियन USD में बहुत आराम से मुमकिन हो सकता है। आप अपने लिए 4 फ्लैट खरीदो, उसको रेंट पे डाल दो, वो रेंट का पैसा आता रहेगा। अब मेरा घर तो है ही, वहाँ पे रहूँगा रेंट फ्री आराम से, और जो बचेगा मेरे पास कम से कम तो $1 मिलियन पता है कितना होता है? 8 करोड़। तो $10 मिलियन होएगा करीब 80 करोड़ के ऊपर। तो इसमें तो आराम से गुजारा हो जाएगा। 80 करोड़ के बाद क्या चाहिए तुम्हें? मतलब एक अच्छी लाइफ ही तो चाहिए। ये थोड़ा ना है कि मेरे को अंबानी बनना है 80 करोड़ के साथ, नहीं। तो सोचो 320 एंड
1 बिलियन इज कितना? 1000 मिलियन. 1 बिलियन इज 1000 मिलियन. तो 320 बिलियन. सोचो कितने कर. अगर इतनी मैथ आती तो मैं नासा में होता ना. मतलब क्या बोले भैया, मैं और आप फ्लाइट बुक करके नेक्स्ट सीजन लिवरपूल में टीम के लिए खेले क्या? मतलब शर्म कर लो, लीग जीत रहे हो, क्या कर लोगे पैसे के साथ? यार अनफॉर्चुनेटली पवन, ये जो ओनर्स होते हैं ना, इनके लिए ये बिजनेस होता है. बिजनेस में ये सिर्फ बिजनेस देखते हैं. अनफॉर्चुनेटली अभी आप आईपीएल में देख लो. आईपीएल में आईपीएल जीतना एक एक पीआर की तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी बात होती है. पर इन लोगों ने इन आईपीएल टीम्स में इन्वेस्ट इसलिए करा 16 साल पहले, ताकि इनके जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रिपल या क्वाड्रुपल हो जाए. अब तो वो 10 15 20 गुनी हो गई है. जो इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए थे 16 साल पहले, जिन लोगों ने ये टीम्स खरीदी थी, जैसे शाहरुख खान ने खरीदी थी, बाकी लोगों ने खरीदी थी, ये कुंडरा उंडरा ने खरीदी थी, शिल्पा शेट्टी और ये प्रीति जिंटा वगैरह ने खरीदी थी, नेसवाडिया ने. अब उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनकी आईपीएल टीम्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है. तो अब अगर उनको, अब मतलब बेसिकली आप एक, वो लोग एक बिजनेस माइंडसेट से सोचते हैं. बाकी सब पीआर करते रहते हैं वो अपनी टीम्स का, अपनी टीम्स का वैल्यू बढ़ाने के लिए. प्लेयर्स अच्छे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि अगर आईपीएल जीतेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो वो इंसेंटिव है अच्छे प्लेयर्स खरीदने का. तो एक जो जो ओनर्स होते हैं ना, लिवरपूल के भी जो ओनर्स होंगे, आर्सेनल के भी जो ओनर्स होंगे, ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इन सारे डिसीजंस को. बाकी कोई चैंपियंस लीग जीत रहा है, प्रीमियर लीग जीत रहा है, कभी देखा है किसी ओनर को आलतू फालतू छलांग लगाते हुए कि ओ मेरी टीम जीत गई? अब्रामोविच के अलावा, अब्रामोविच बहुत इन्वेस्टेड होता था. और भी थोड़े थोड़े से हैं ओनर्स जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, जैसे एनएफएल की टीम्स होती हैं, उनके ओनर्स बहुत इन्वेस्टेड होते हैं. एंड जो बिलियनर्स होते हैं ना, फॉक्सेस आ गए. तो बिलियनर्स होते हैं, कुछ बिलियनर्स होते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं. तो वो जो पैशनेट स्पोर्ट्समैन वाले जो बिलियनर्स होते हैं वो बहुत इन्वेस्टेड होते हैं, जो एनबीए टीम्स के जो ओनर्स हैं, एनएफएल टीम्स के ओनर्स हैं. 20 मिनट में अभी कहाँ जा रहा है भाई? रात के 2 बजे. रात के 2 बजे क्या काम आ गया? अ, मतलब मेरे जैसे फैंस ट्रॉफी जीतना डिजर्व नहीं करते क्या? बस टॉप 4 खुश रहूं क्या? एक्चुअली मैं एज एन आर्सेनल फ़ैन टॉप 4 से बहुत सालों से खुश था. जब टॉप 4 निकल गया ना हाथ से, तब और ज़्यादा दुखी है. अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत देख लो कितनी बुरी हो गई है. टॉटनहम हॉटस्पर की हालत देख लो कितनी बदतर से बदतर. मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत और भी ज़्यादा बदतर से बदतर. 6 मैनेजर बदल दिए मैनचेस्टर, 6 या 7 मैनेजर बदल दिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और उनकी स्थिति बेकार से बुरी होते हुई चली जा रही है. मतलब कोई सोल्यूशन, रूबन एमोरम आया, रूबन एमोरम स्पोर्टिंग के साथ पेल रहा था सबको, टॉप पे चल रहा था वो चैंपियंस लीग में, टॉप पे चल रहा था बिल्कुल. और अब देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड आते ही वो बेचारा, उसको समझ में नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या. ही हैज़ नो ऑप्शंस. ही इज डम्बफाउंडेड कि व्हाट द हेल डू आई डू विद दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड. क्योंकि वट एवर आई ट्राई टू वट एवर आई ट्राई टू inculcate into this club, इट सीम्स लाइक इट्स फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स. मतलब कोई सुन भी रहा है मेरी बात या नहीं सुन रहा है? जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम कर भी रहे हो. बेचारा आदमी जब आया था मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही वाज ऑल स्माइल स्माइल कर, हाँ हाँ यस यस या वी नो, आई नो इट्स अ बैड सिचुएशन बट विल फिक्स इट यार. एंड अब देखो नाउ हिज होल्डिंग, ऐसे बैठा हुआ है कभी, या फिर करके बैठा हुआ है. तो इट्स अ रियली रियली सैड सिचुएशन. एंड मेरे को, आई honestly, I personally, I can't even enjoy it anymore. I was enjoying it early on. Your Manchester United rivals, look at them not doing well. But now it's not, it's no longer fun. It's like, stop, stop. They're already dead. ओनर्स हो तो सऊदी वाले जैसे होने चाहिए. अब देखो सऊदी सऊदी अरेबियंस के पास बहुत सारा पैसा है, एज यू नो, विद न्यू कासल यूनाइटेड दे हैव एंडलेस शिप्स ऑफ मनी. मतलब अगर आप एक जहाज़ खरीद लो ना, शिप,
एंड आप 2-2 हज़ार रुपए के नोट इकट्ठे कर लो तो उस जहाज़ में भर जाएगा वो, इतना सारा पैसा उनके पास। आई थिंक, आई मीन दैट्स जस्ट मतलब अपनी तरफ से एक अजम्पशन बना रहा हूँ मैं, बट दैट इज़ व्हाट आई थिंक। फिल फोर्डन। 35 मिनट हो गए हैं मैच में। एक सेकंड यहीं रहना ना, मैं ज़रा कॉफ़ी लेके आ रहा हूँ। मैं यहीं हूँ, बस पानी गर्म कर दो। आ गया मैं गाइस, आई एम बैक। सॉरी। एक्सक्यूज मी। क्या कह रहे हो? पेप अच्छा काम किया सिटी के साथ साइन करके। भाई आप, भैया पेप भी बहुत पैसा डिमांड करता। देखो, नोटिस करो कि पेप ग्वार्डियोला के पास जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करता है। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है इन चीज़ों में। अब तक उसको पैसे खर्च करने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि उसकी टीम ओवर अचीव कर रही थी, लिटरली ओवर अचीव कर रही थी हर एक मैच में। 4 सीज़न से प्रीमियर लीग जीते जा रही है, तो ऐसी कोई, एंड चैंपियंस लीग भी जीत गई, तो ऐसा कोई कुछ उस पर उंगली डाल नहीं रहा था कि यार ये करो वो करो, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। माइल्स लुइस कैली स्कोर्ड फॉर इंग्लैंड। अद्वैत, माइल्स लुइस कैली स्कोर्ड फॉर इंग्लैंड। तो अभी जब उसके पास प्रॉब्लम आनी शुरू हुई पेप ग्वार्डियोला के पास, तो इमीडिएटली उसने क्या करा, उसने थोड़ा सा पीआर करने के लिए उसने जनवरी में 3 प्लेयर साइन करे। 3 में से एक प्लेयर तो वर्ल्ड क्लास था, बाकी खुसानों को उसने साइन करा, थोड़ी सी मीडिया चर्चा हुई। सेलिब्रेशन पुलिस कहाँ है? है भाई, कहीं ना कहीं है, अभी आए नहीं है। आई डोंट थिंक दे आर वॉचिंग द गेम टुडे। इवन आई डिसाइडेड लास्ट मिनट टू डू द स्ट्रीम। रिसेंटली मैंने एक स्टैट भी पढ़ी थी, पेप स्पेंट मोर देन $2 billion ऑन हिज ट्रांसफर्स। यस 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 यस। देखो, उसके ओनर्स ने बोला कि हम चाहते हैं कि यू टेक मैनचेस्टर सिटी टू ग्रेटनेस। उसने बोला कि, उन्होंने पूछा हो कितना लगेगा, उसने बोला $2 billion। ओ व्हाट अ हेडर बाय बेलिंगम, व्हाट अ सेव। Man, this Bellingham, I'm telling you, I'm a little bit concerned about Jude Bellingham when we play Real Madrid. Advait, I'm a little bit concerned about this guy. He's pretty good. I think Saliba and Gabriel can manage that. I mean, who is this guy? Lassie. How is England playing under Tuchel? I think
इंग्लैंड आर प्लेइंग हाउ इंग्लैंड यूजुअली प्लेज। आई मीन ये तो बस अल्बानिया के अगेंस्ट मैच है, तो कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली क्या ओपिनियन बनाए, क्योंकि इंग्लैंड के पास पोजेशन रहा है पूरे गेम में। कुछ ऐसा अलग नहीं कर रहे हैं जो यूजुअली करते हैं, पर जो भी कर रहे हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। पर एक चीज़ मैं नोट ज़रूर करूँगा, England have been creating a lot of chances as they usually do. They have a very strong side as they usually do. But then again, they are missing easy chances. They are. अभी recently अभी एक easy chance miss करा, बेलिंगम ने हेडर मारा, कीपर ने सेव करा, हैरी केन के पैरों में आके बॉल गिरी, उसको स्कोर कर देना चाहिए था, पर डिफेंडर ने ब्लॉक कर दिया और बॉल क्रॉस बार के ऊपर जाके चली गई। ऐसी सिचुएशंस में ठंडा दिमाग रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कौन होता हूँ हैरी केन जैसे, जूड बेलिंगम जैसे लोगों को क्रिटिक करने की पोजीशन में। पर अगर आप, एंड ये कोई फ्रेंडली मैच नहीं है, ये वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच है, तो एक सीरियस मैच है। तो इसकी वजह से आई फील दैट इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की जो हिस्ट्री है वो यही है कि वो अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार देते हैं। ओ, एक और चांस, डैन बर्न के पास हेडर का चांस, डैन बर्न हिट्स द क्रॉस बार, आई थिंक इट वाज सेव्ड बाय द गोलकीपर एज वेल। देखो चांसेस क्रिएट करे जा रहे हैं, अभी भी एक और चांस डैन बर्न ने क्रिएट करा, हेडर मारा, पावरफुल हेडर, सीधा क्रॉस बार पे, सीधा क्रॉस बार पे। तो इंग्लैंड ये सेम ओल्ड इंग्लैंड है जो चांसेस क्रिएट करती है पर चांसेस को कन्वर्ट नहीं करती। एंड ये अभी फिलहाल जो 40 मिनट का मैच हुआ है उसमें तो यही देखने को मिल रहा है कि जो चांसेस इंग्लैंड ने क्रिएट करे हैं, दे हैव नॉट कन्वर्टेड देम, एंड दिस हैज़ बीन इंग्लैंड स्टोरी सिंस टाइम इमेमोरियम। Imagine all those, another corner for England, 1 second, goes to the far post, Dan Burn collects it, cleared by Lackey. Imagine all those English sausages who said MLS doesn't deserve a call up, etc. How are you feeling now, you fat colonizers? See, English fans are one of the most abusive, loud hooligans. That's what their name is, right? That's where the name hooligan actually came from, because that's what the English fans are. Wherever they go, whichever World Cup they go, once they lose, they start breaking and tearing everything else down. And it's quite funny, like whenever they lose, whenever England loses, they deserve it. They actually deserve it. When they lost in the World Cup semi-final to Croatia, I was very happy. Very happy, because I wasn't happy because some of the players that I really like were in that squad. That's not why I was happy. I was happy because of, I was happy because of looking at those sad English fans' faces, because sometimes those guys deserve to be humbled. Definitely. I mean, this has been a very important word this year. Remember when they lost in the Euros at this very stadium, the Wembley Stadium, to Italy? Remember what they did to Rashford. Remember what they did to Saka. Remember what they did to all the uh, African-born players or African heritage players who were playing for England. Racism, straight up racism. Didn't have any other thought in their head. So straight up, let's do some racism. That's what I'm gonna do. That's what they do. They're violent. They're racist, and the worst of them comes out when their side loses. Bhaiya, let's assume if Trent goes to Madrid for free, so how should I react as a club legend? और free में गया बिना पैसे देके, ऐसा याद रख लूँ उसको। देखो, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं पवन, तो मेरे हिसाब से आई फील ट्रेंड तो जा रहा है, और फ्री में ही जा रहा है। पर ट्रेंट अलेक्जेंडर के साथ लिवरपूल ने काफ़ी अच्छे मोमेंट्स बनाए, बार्सिलोना को 4-0 हराया जब 3-0 डाउन थे, और भी कई सारे गेम्स रहे हैं जहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स ऑन द पिच फॉर देम। हो सकता है शायद मो साला भी चला जाए, हो सकता है शायद वर्जिल वैन डाइक भी चला जाए। तो जब ये प्लेयर्स चले जाते हैं ना, आज नहीं तो कभी ना कभी, आज या 5 साल बाद, 6 साल बाद में भी, शायद 10 साल बाद, आपको वो मोमेंट्स याद रहते हैं जहाँ पे वेयर दीज प्लेयर्स वर गिविंग इट ऑल फॉर द शर्ट,
all for the club, all for the badge, and gave you one of the most best moments that you could have wished for as a football fan, as a club fan. तो वो जो मोमेंट्स है ना, आई फील उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. द फैक्ट दैट दे गेव इट ऑल फॉर द क्लब एट वन पॉइंट इन टाइम. जैसे अभी आर्सेनल के साथ देख लो, कितने सारे प्लेयर्स थे जो आर्सेनल को छोड़ के मैनचेस्टर सिटी गए. कितने सारे प्लेयर्स थे. रॉबिन वैन पर्सी हमारे डायरेक्ट राइवल मैनचेस्टर यूनाइटेड जाके प्रीमियर लीग जीता. तो अब तक मेरे मुंह में कड़वाहट है ये सोच के कि यार वो हरामखोर वहाँ चला गया, आर्सन वेंगर ने बेच कैसे दिया. वो सबसे बड़ी आर्सन वेंगर की मेरे को गलती लगती है. सबसे बड़ी मतलब दोस्ती निभा रही है एलेक्स फर्ग्यूसन के साथ. इसका ये मतलब थोड़ा ना अपने क्लब कैप्टन को, अपने बेस्ट स्ट्राइकर को मैनचेस्टर यूनाइटेड भेज दो 20 मिलियन के लिए. वो तो मेरे लिए सबसे बड़ी, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई फील दैट आर्सन वेंगर मेड. उसके अलावा समीर नाजरी छोड़ के गया, एशली कोल छोड़ के गया, गायल क्लीशी छोड़ के गया, फैब्रिगैस गया, ऑनरी गया. ऑनरी तो चलो अलग रीजंस थे उसके जाने के, बट क्लीशी गया, सानिया गया, और कौन कौन गए, अलेक्सिस सैंचेस चला गया, ओबामेयांग चला गया. कितने सारे प्लेयर्स आर्सेनल को छोड़ के चले जाते हैं. पर जो मोमेंट्स उन्होंने आर्सेनल के लिए क्रिएट किए थे, जब उन्होंने बैच के लिए खेला था, टीम के लिए खेली थी, इवन दो हमारी टीम इतनी पक्की नहीं थी, ये नहीं था वो नहीं था, पर तब भी वो मेमोरीज, वो जो गुड मेमोरीज होती हैं, यू शुड ऑलवेज चेरिश दैम. एंड जब हम बड़े हो जाते हैं ना, जब हम सीनियर हो जाते हैं, तो वी स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट थिंग्स लाइक यू नो व्हाट at that time when you're young and when things are really heated up, you do feel very angry that why did these players leave, but you're feeling angry. It's like आपने कभी नोटिस करा है when you look into a boiling pot of water, you can't really see your reflection. What that means is that when you're angry, when you're steaming, you can't think straight, you can't see what's right and wrong. So in the same way, when the water is still, when you've calmed down, then you must think about all the positive things that have happened and try to eliminate any kind of negativity that surrounds that surrounds the best players that have played for your club. How would you react if Saliba goes free for Madrid? बिल्कुल boiling pot of water वाला situation हो जाएगा. बिल्कुल boiling pot of water वाला situation हो जाएगा. मुझे गुस्सा आएगा, बिल्कुल गुस्सा आएगा मुझे. पर मेरा क्लब में होप एंड उम्मीद है. पर आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कह रहे हो कि मुझे कैसा लगेगा. मैं बहुत गुस्सा करूँगा, मुझे शर्म आएगी मुझे कि ये क्या हो गया. मतलब रोने को आ जाऊँगा मैं, मतलब रोऊंगा नहीं पर रोने को आ जाऊँगा. तो वो दिल में एक कड़वाहट सी होने नहीं लग जाती है, वैसा सा फील होने लग जाएगा कि सलीबा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रियल मैड्रिड जा रहा है, वो भी फ्री में, जबकि उन हरामखोरों के पास बतेरा पैसा रखा हुआ है. एंड पैसे की बात भी नहीं है, इट्स अबाउट सलीबा प्लेइंग फॉर आर्सेनल. तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा. अब ट्रेंट को हीरो बनाना है, बट ही हैज़ टू रिमेंबर ही विल बी इन शैडोज ऑफ एम्बापे एंड विनीसियस. वो तो आई थिंक ही, अभी बेलिंगम को ही देख लो, बेलिंगम इज ऑल्सो इन द शैडोज कंपेयर टू दोज टू, इवन दो ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड विल ऑल्सो बी इन द शैडोज. सो दैट इज समथिंग यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट. But when you're in that Real Madrid side, you have a very good chance of winning back-to-back Champions Leagues. That's the kind of team, that's the kind of attraction that's why players are attracted to them. So, that's a very powerful, strong attraction career-wise and legacy-wise. Did you see the video I shared? No, I have not seen any video on the WhatsApp group. I haven't even opened up WhatsApp. I haven't even read messages from WhatsApp, actually. That message I saw, but I didn't really open the article. I didn't really see the video. Apparently, Jurgen Klopp's 18-19 Liverpool team, which hit 97 points, would smash Arsenal's Invincibles. Now, see, we will never really know, will we? We will never, ever really know. Smash Arsenal's Invincibles. If you're talking about smashing, then we already saw what happened at the Battle of Old Trafford. If you guys have forgotten, I will re-jog your memory. We were playing Manchester United at Old Trafford in our 50th undefeated game. And they literally, Gary Neville should have been sent off 4 times. Wayne Rooney should have been sent off. Then he dived to get a penalty, which Van Nistelrooy scored. So many Manchester United players should have been sent off in that game. But they weren't. Gary Neville ने studs up सीधा on the side of the knee मारा था. होजे एंटोनियो रेयस को मतलब तोड़ दिया था लिटरली.
That is the way that they were playing in that game, because they were like, we don't care, हम तुम्हें जीतना है ना हाँ. And then Wayne Rooney dive, shameful bastard dive, अपने आप को legend बुलाता है भोसड़ चोद. Anyway, let's not let's not get riled up. मेरे को गाली वाली देने का मन नहीं कर रहा अभी. रात के 2 बज रहे हैं, सबको सुनाई दे जाएगा. No, 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 no. I just remember what Klopp said to Coutinho when he left to Barca. You will be just another player. Same goes for Trent. देखा ना, and Coutinho के साथ अच्छा नहीं हुआ. Coutinho could not settle at Barcelona. He had to come back to Aston Villa, and Aston Villa में he was a special player. But at Barcelona, he's just another guy. Although he did beat Bayern Munich. Oh no, Barcelona gaya. But then from Barcelona, he went on loan to Bayern Munich. And then for Bayern Munich, he scored in that 8-2 thrashing to Barcelona in 2020. Yeah, I remember that. So yeah, Coutinho has had his moments too. Henry and Bergkamp would send Virgil back to Southampton, and Cole would pocket Salah like Nuno Mendes did for PSG. See, Henry versus VVD. I think Henry would have won that battle. I think Henry would have won that. VVD is not invincible. He's good, but he's not invincible. Henry is invincible. He's literally proved that. See, okay, fine. If you want to talk specifications, then Henry's sheer speed and control on the ball and his intelligence, like he will not wait a second. If he sees an opening, he's going to smash that ball, and he's going to smash it well and deadly accurate. So VVD is going to have the toughest job in his hands. I mean, VVD right now, I mean, who are the toughest strikers he's had to face? And he couldn't even face them. Ousmane Dembele. He couldn't even sort out the Ousmane Dembele situation against PSG. He could not sort out Alexander Isak, who literally teabagged him in that Carabao Cup final. So Henry versus VVD is going to be a mismatch. And also explains bhaiya why Madrid want to sign players for free. Are they donating profits to charity? अभी देखो, जैसे मैंने समझाया ना, it is business. अगर उनको अच्छा प्लेयर मिल रहा है, उनका टारगेटेड प्लेयर मिल रहा है, वो भी फ्री में, तो वो गधे ही होंगे जो पैसा दें उसके लिए. जस्ट बिकॉज पैसा है, उसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें पैसा देना पड़े दिखाने के लिए हम रियल मैड्रिड है, हमारे पास पैसा है तो हम पैसा देंगे. अगर फ्री में मिल रहा है, फ्री में लो भाई. दैट इज हाउ बिजनेस वर्क्स. ये सारे के सारे बिजनेसेस ये चाहते हैं बाकी बिजनेसेस डूब जाए, ताकि ये उनका बिजनेस खरीद ले सस्ते से सस्ते में, और फिर उसके साथ जो चाहे करें. बिजनेस ऐसे ही चलता है. चूत यार, ये ऐड बहन चूत. Why do they have to be so fucking loud? नहीं यार, वो we were going down memory lane, तो अद्वैत का वो कमेंट देखो. वो योगन क्लॉप वाली टीम वुड स्मैश आर्सेनल इनविंसिबल्स, तो उस पर बात करनी शुरू हो गई. वहाँ से लेके फिर बात बैटल ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड पे आई, वेयर वी वर प्लेइंग आवर 50th गेम एज इनविंसिबल्स अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो थोड़ा सा stuff got a little bit heated up, but it's fine now. Is Perez also as conjuice as Liverpool and Arsenal players? Well, like I said, it's all business. If you're getting something for free, if you're getting something for cheap, and if you're getting something of value that is for cheap, so only a fool would pay money for that. You know, business works in the way is buying the cheapest stuff, high quality stuff in cheap mein mil raha hai, so it's like a golden day. It's a golden egg. And then when you get it, you get a lot of value out of that, and you paid like 1/16th the amount. That is a dream scenario for businessmen. And Perez is the businessman of football. Him, that Infantino guy, ये सारे लोग बिजनेसमैन हैं. इसे बिजनेस माइंडसेट से सोचते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं. ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ, मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस. मनी इज हैप्पीनेस. वंस यू हैव अ शिट लोड ऑफ मनी, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. कोई नहीं पूछ रहा. यू कैन गेट आउट. दैट्स अ गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड ऑल्सो, बाय द वे. यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. विक्की, हेलो, गुड इवनिंग. अरे लेट आया यार आज, क्या बात. चलो कोई नहीं, आए कम से कम. नाइस टू हैव यू बैक.
मैंने भी एक्चुअली लास्ट मिनट ये स्ट्रीम करने की सोची थी, तो देयर वाज़न्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर. Pawan says Perez signed Mbappe for free. Is there any footballer whose valuation more than 100 million? Is there any player? There are several players whose evaluation is more than 100 million. अगर मैं आर्सेनल में ही देखूँ तो बुकायो साका इज़ वेल ओवर 100 million. I think he's around 150 or something. Then William Saliba, in my mind, is 100 million. Although some people say 80 million, but I don't agree with that. You said you'll come day after. I actually forgot to check कि कौन कौन से matches थे. But अभी मैं उठा and then I realized कि there is a game. It's a World Cup qualification game and it's Thomas Tuchel's first game as England manager, the first German manager that they've had, the first international manager actually, and he's German. It was quite awkward when I was watching the national anthem being played and he was just standing there like, So yeah. Anyway, we're here. It's nice to have you all guys back. Nice to chat with you again, watching a football game together, as we do. I think थोड़ी देर में the second half is about to start. ये बेमतलब के मेरे को जब ads देते रहते हैं, I really don't like that. But it is what it is, you know. Anyway, what are the other chats? Perez isn't confused, bhai. That guy is living a legendary life. He's managing a club where people want to play. That is true. Advait says Darwin Núñez is worth more than 100. Beta says no. He is saying that Mbappe's valuation is more than 100 million and Perez signed him for free. अभी मैं वही तो कह रहा हूँ ना, द बिजनेस माइंडसेट तो यही है. बिजनेस वाला माइंडसेट तो यही है. अभी वहाँ पे PSG का बहुत बड़ा लॉस हुआ, तो वो जो भी उनका शेख था, ही मस्ट हैव बिन वेरी एंग्री एंड पेरेज वुड हैव बिन ओवर द मून कि भाई इतना बड़ा प्लेयर मेरे को फ्री में मिल गया, हैप्पी डेज. एंड देन फिर इसने अपनी टीम्स के साथ ये डिस्कस करा होगा कि यार और प्लेयर्स बताओ जिनको हम फ्री में साइन कर सकते हैं. तो ही मस्ट हैव स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग कि भाई अगर फ्री में मिल रहा है 100 million वैल्यूएशन वाला प्लेयर, तो क्यों ना लूँ. दैट्स ऑल बिजनेस. Bro, I don't agree with your business model statement. Every player want to be hero. They just want to be Ronaldo, but players don't understand how difficult it is to match his levels. ठीक है. I mean, player is not in charge. Owners, मतलब ये जो साइनिंग वाला पैसा होता है ना, ये प्लेयर को तो वैसे भी नहीं मिलता, क्लब को मिलता है. तो I mean, his valuation is number one decided on the kind of performances that he gives, how valuable he is to the club, and वहाँ से उसकी valuation बढ़ती है. जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला होता है, तो जो उसका पेरेंट क्लब होता है, जैसे लिवरपूल का पेरेंट क्लब अभी, जैसे ट्रेंट का पेरेंट क्लब अभी लिवरपूल है, तो लिवरपूल ट्रेंट के साथ बैठेगा, उसके एजेंट के साथ बैठेगा, बोलेगा कि देखो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर देते हैं, ठीक है, ये सैलरी हम तुमको देंगे, या 2 साल का कर लेते हैं, एंड इतना इतना तुम्हारा वैल्यूएशन रहेगा क्लब के साथ. उस चक्कर में क्या हो जाएगा, एजेंट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को बोलेगा कि मत कर, अगर तूने ये साइन कर दिया तो रियल मैड्रिड वाले तेरी जो वेजेस हैं, जो तेरी सैलरी वेजेस हैं, उसको 100,000 से कम कर देंगे. अभी एजेंट से बात करेंगे ना वो रियल मैड्रिड वाले, तो रियल मैड्रिड वाले एजेंट को बोलेंगे कि देख, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और अगर हमको पैसे देने पड़े, अगर हमको 50 मिलियन 60 मिलियन देना पड़ा उसको ख़रीदने के लिए, तो हम उसकी सैलरी कम करेंगे, और अगर उसने नहीं माना तो हम उसको साइन ही नहीं करेंगे. तो अभी ये ट्रेंट अलेक्जेंडर के लिए एक पर्सनल इशू खड़ा हो जाता है जब उसको एजेंट उसको बोलता है कि अगर आपने लिवरपूल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर दिया तो रियल मैड्रिड आपकी सैलरी वेजेस कट कर देगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से पैसा बनाना होगा, मतलब पैसा निकालना होगा. जैसे आपके लिए अगर वो 50-60 मिलियन देंगे लिवरपूल क्लब को, तो वो आपकी वेजेस से वो पैसा निकालेंगे, 100,000 या जितना भी हो. तो दैट इज़ अ डिसीजन दैट ट्रेंट हैज़ टू मेक. या तो ही कैन हैव 100,000 pounds every week extra, or he can have 100,000 pounds per week less. So for a player, from a financial point of view,
And from this stage in his career, those are also very important decisions that need to be made. अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो था सिचुएशन, ही वाज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रियल मैड्रिड, द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, और उसका ब्रांड एम्बेसडर, द गोल्डन बॉय. ऐसी सिचुएशन रेयरली कभी मिलती है. डेविड बेकहम के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन थी जब वो गैलेक्टिकोस के लिए साइन किया था. एंड दैट इज Sven Göran Eriksson coached England. He was Swedish. यार एक्चुअली आई वांट टू डू इट, पर अभी ना कुछ काम वाम चल रहा है घर में, एंड फैमिली में किसी की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब चल रही है. तो आई डोंट, मतलब अभी फुटबॉल स्ट्रीम तो मैं कर ले रहा हूँ अभी रात के 2 बजे, पर मेरे को पूरे दिन उठे रहना पड़ता है बिकॉज आई हैव टू सॉर्ट. तो मेरा जितना भी कंटेंट का काम होता है मैं अभी सुबह 7 बजे तक कंप्लीट कर दूंगा. रील बनाऊंगा या ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा. उसके बाद मेरे को घर का काम देखना होता है शाम के 4 या 5 बजे तक. फिर मैं जाके सोता हूँ. तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ट्रस्ट मी, आई रियली वांट टू डू इट, पर जब थोड़े से थिंग्स स्टेबलाइज हो जाए, देन वी विल, आई प्रॉमिस यू, वी विल डू इट. मज़े के साथ करेंगे, इन्जॉयमेंट के साथ करेंगे, एंड वी विल हैव अ नाइस लॉन्ग डे. एंड अभी मेरा नया लैपटॉप भी आने वाला है. मैं कब से कह रहा हूँ, 2 हफ्ते 3 हफ्ते से कह रहा हूँ नया लैपटॉप नया लैपटॉप. बट ट्रस्ट मी, नया लैपटॉप आने वाला है. And then we can do a gaming thing, we can do a pop thing, we can do a pop culture thing, movies, TV shows, whatever you want. And we'll do it. I promise. Okay, second half is about to start, boys and girls. Excuse me. Just praying for days, Pep leaving City and Perez leaving Madrid. अभी देखो कभी ना कभी तो होएगा ही. Pep Guardiola has signed a 2-year contract extension after last season. So he's going to be here for next season as well. But is he going to be here after that is the question. So maybe we're going to see 2 more years of Pep Guardiola. After that, it's anyone's guess. KV Bhai and everyone here, your 3 favorite players this season can be your club's player or any other club's players. Okay, I'm immediately going to drop it. I'm going to say Mo Salah for Liverpool. I'm trying to think objectively about this. Declan Rice for Arsenal. And I think Virgil van Dijk for Liverpool. I mean, I'm pretty sure that I'm missing someone from some other team. Maybe Justin Kluivert. Justin Kluivert from Bournemouth. He's had a fantastic season. In my opinion, he has. Really enjoy watching him play. ओए होए, ये बेचारे डैन बर्न की लात इतनी ऊंची है ना, उसने बेचारे अल्बानिया के प्लेयर के मुंह पे मार दिया. He was just trying to clear the ball and उसके मुंह पे जाके लग गई. How unfortunate. मेरी चैट रुक गई है क्या? अच्छा नहीं, सॉरी, उसने डिलीट कर दिया. ओके ओके, दैट्स फाइन दैट्स फाइन. आई थॉट बेटर अपना प्लेयर्स बताने वाला था, बट ही डिलीटेड हिज मैसेज. Okay, free kick for Albania in a somewhat promising position. On the right hand side, can Albania score? Remember guys, ये कोई friendly match नहीं है. This is a World Cup qualification game.
and every team wants to play in the World Cup. Every team wants to qualify for the World Cup. Obviously, England are going to be favorites in this game, looking at the kind of squad that they have. Relax, Declan Rice. Relax. इतना ज़्यादा मेहनत मत कर मेरे भाई. Calm down. Ooh, great ball. And Foden has collected it. He should have passed first time. अगर इसने अपना, if he had his head up, Phil Foden should have passed it first time. Harry Kane has gone down on his knees as he's used to. Oh ho, I thought you meant in the Premier League. अच्छा ठीक है, मैं फिर से मैं लिस्ट बनाऊंगा. एक सेकंड. I'll make the list again. I'll make the list again. 1 second. Rice, Gabriel, Saliba. Rice, Gabriel, Saliba. If moving Arsenal players, Yamal, Salah, and Musiala. That's a very good shot. So if I had to choose three best players from, I think Rafinha would be there, and I think Musiala would not be there. And that's just my opinion. Lamine Yamal, yes, he would be there. The kind of goals he scored for Barcelona, 100%. I think Pedri is also a very good shout in midfield. Who else? See, Barcelona attacking wise has been a force of nature, to be very honest with you. Matlab, what a performance. Highest number of goals scored in the Champions League. Look at that goal difference in the La Liga. It's laughable. It really is. It's too much for anyone to deal with, especially for Real Madrid. It's either Salah or Rafinha. I love to watch them both. If just midfielders, Rice, Pedri, and Gravenberg. That's a very good shout for Gravenberg. Um, Although maybe Valverde gets in there. He has been what a player he has been for Real Madrid. I think Valverde gets in there. Um, what about dark horses? Dark horses, some players have consistent form. Some players show so much potential and ability. Uh, like some of Real Madrid's players that I like to watch. Yeah, am I being stupid? Brahim Diaz, I think he's a good player. I think Brahim Diaz is pretty decent. Um, no. Bellingham, ठीक ठीक ठाक सही है. Oh, Bellingham. Just talking about Bellingham when he gets a head on the ball. Dan Burn has been nutmegged. But the pass is really bad. He should have passed it far post. Albania is not playing so bad. They're playing decent. वो तो बस पहला गोल लग गया. Not a foul. Rashford on the floor. Rodrigo, how can I forget him? I have to memorize this entire Real Madrid squad. Oh my God, whenever I start thinking of 8th April, बस एक अलग सी एक excitement plus एक fear वाली feeling आनी शुरू हो जाती है. Vicky says that he is with England today. Chalo, I mean, so far so good for English fans. They're doing a pretty good job. They're winning the game. That's all that you can ask from them at this point. Hmm.
Oh, what a pass. Phil Foden had a chance to pass it to Harry Kane, but he could not do that. Are there any other games going on today? England के चलो बाकी games देखते हैं. There is another England game. England versus Latvia is going to happen on 24th March. वो भी रात को होएगा. I'm not completely confident whether we will be able to do that match or not, but that is when it is. So we will decide a day before. बाकी UEFA Nations League में अगर मैं देखूं तो the next game is also going to happen on 24th March, 23rd March. My apologies, 23rd March. मतलब कल रात को मैच होएगा. ये तो बड़ी जल्दी मैचेस हो रहे हैं यार. जर्मनी वर्सेस इटली कल रात है. पोर्चुगल डेनमार्क ये सारे मैचेस कल रात है. तो वी आर गोना बी डूइंग अ स्ट्रीम टुमारो आल्सो गाइस. It is again going to be Netherlands versus Spain. And yeah, hopefully it should be fun. जो पहला गेम था Netherlands versus Spain ended in a 2-all draw. So that was a fantastic game in my opinion. Ah, excuse me. I have said all this about my top favorite players, but whenever Saka returns, he's on top of every list. Yes, I really hope that when Saka does return, he returns in good form, in good health, because we really need him if we are to have any kind of say in the Champions League. उसके बिना बहुत मुश्किल होएगा. Because Real Madrid just have so much strength, so much depth. उनकी जो playing 11 है, it is extraordinary. And उनकी जो bench strength है, that is also fantastic. So it is going to be somewhat of a challenge. रियल मैड्रिड तो कंफर्टेबल हो गए होंगे यार. वो सोच रहे होंगे कि यार आर्सेनल को तो हरा ही देंगे. नहीं, दैट्स व्हाट दे मस्ट बी फीलिंग. सोशल मीडिया पे भी जो मीम्स अभी बन रहे हैं, ऑल दीज राइवल फैंस, दे मेकिंग दीज मीम्स comparing us to a nothing kind of a team in front of Real Madrid and all that. But other teams have beaten Real Madrid as well. Although I must say that, I am nervous. I have every right to be nervous. And I really don't know what's going to happen in that match. But I really hope it's an exciting game. It's a good game. And Arsenal, I just want Arsenal to win. Just win. Please win. Please. What a day that would be. Even if he is playing the first leg, he will most likely come in as a substitute. That is true. He will. That is, in all likelihood, the most realistic scenario in which Saka is going to come and play for Arsenal in that match. England, meanwhile, in this World Cup qualifier fixture, still maintaining a 1-0 lead, holding on to most possession. Albania does have its moments here and there, but mostly it has been England. Now, just to give you guys a little bit of a recap, in the first half, England did have some very good chances, which they could not convert. They really should have. I mean, honestly, that Harry Kane opportunity, it should have been converted. Pickford playing with fire over there. That was just too near to the Albanian players. Konsa leaving it forward, cleared by Lackey. Okay, what's that? If he plays 90 minutes in the first leg without playing any other game, fully without any issue, मैंने घर पे हमला हाँ उसको ट्विटर पे बोल देना भाई क्या कर रहे हो तुम. I think just to put him up against Real Madrid in his first game, I don't know what's going to happen, man. Honestly, I don't know what's going to happen. It is such a confusing situation. It is, मतलब अनश्योरिटी है कितनी सारी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे खेलेंगे क्या खेलेंगे, क्या टैक्टिक्स होंगे कौन से टैक्टिक्स नहीं होंगे. Meanwhile, Marcus Rashford here has a chance.
And he's shown why he's not that good. Jude Bellingham has another chance. Harry Kane heads it, but it's gone wide. Another chance for England that goes wide. Ashneer, क्या कर रहा है भाई तू? Ashneer bro. Yeah, that seems about right. I think I think the good thing is that at Arsenal, I mean, even though a lot of rival clubs criticize us for this, but at Arsenal we usually do have a lot of faith in our managers, which other clubs don't as much. क्योंकि थोड़ी सी उनकी कहानी अगर डूबने लग जाती है तो वो मैनेजर की जान के पीछे पड़ जाते हैं. Meanwhile, Arteta at Arsenal has, I mean, he's done well also for the club. He's done so well. He's improved the club so well. Yes, trophies are lacking, but I think we've come so close. अगर हम वो प्रीमियर लीग जीत जाते ना, ये आलतू फालतू बकचोदी नहीं चल रही होती. Miles Lewis Kelly, what an excellent interception. He could be the one who could do so well for Arsenal against England. This time, chance for Jack Grealish. Not the best of crosses. Good passing by England. Why is Jack Grealish playing in the centre forward role? अच्छा ठीक है, पीछे आ गया तो. I think England is passing the ball around quite well. पर उसके अलावा कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है चांसेस का. That is something that is lacking extremely. Konsa, Harry Kane. Oh, good chance. Oh, they should do better there. Phil Foden is holding his back. Just taken a slight knock. 61 minutes played. I have already told you, but I won't start MLS against Real Madrid. For me, he's still a kid and he will make a weird mistake, and we can't afford that at this stage. Honestly, in a game so big, a weird mistake could be made by even one of our senior players. ऐसा हो ना, touch wood. Please ऐसा ना हो, touch wood. Since when have I become so superstitious? Touch wood, but I usually do touch wood. I think touch wood is okay. Did you know that wood is the rarest element in the universe? It's only found on planet Earth and it's made out of biological material. So technically, wood is more priceless than a diamond or gold or any other metal that you can find in the universe. It's true. You can look it up. You get interesting trivia, sneaky facts at KV Reacts from time to time. And I said element. After this, I need to eat something. यार भूख लग रही है. Konsa looks quite good for England. Substitution for Albania. But he is 18 and I trust him. But remember the red card he got against West Ham when he was, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, I do remember. Yeah, I see your point. I do see your point.
Ah, हाँ, I haven't checked. अरे यार बेटर गिव मी सम आइडियाज़ कि यार कोई ट्रेंडिंग टॉपिक अभी जिस पे रील बनाऊँ। आज मेरे को रील बनानी है। मैं सोच रहा था टू मेक रील ऑन ईस्ट बंगाल मोहन बगान किडनैपिंग प्लेयर्स। उसका मैंने कॉपीराइट वगैरह स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है, पर आई डोंट फील दैट्स द राइट थिंग टू मेक राइट नाउ। कोई और टॉपिक है तो बताओ उसके बारे में। आई एम कंसिडरिंग मेकिंग समथिंग। आई मीन आई हैव ऑल द टाइम टुनाइट। Look at this. Look at this. Oh, Lewis Kelly again, man. Lewis Kelly is having an amazing game. An amazing game. Oh, could be a penalty. अगर एक गिर जाता ना तो हो सकता है पेनल्टी दे देता रेफ। What a ball. सेंड समथिंग ऑन डिस्कॉर्ड। अरे वाह यार, ये शॉर्ट्स पे भी थोड़े से व्यूज़ आ गए, नॉट बैड। आर्सेनल रियल मैड्रिड वाले पे 500 व्यूज़ आ गया। इंडिया बांग्लादेश वाले पे भी 500। हॉलैंड वाले पे 400। 19, 22, 25 लाइक्स, नॉट बैड मैन, नॉट बैड। मैं जब सोया था तब तो क्या 40-50 व्यू थे इस पे। प्रीटी मच पिक्ड अप। वेल डन। गुड जॉब बॉयज। उसके बाद डेड हो गया है एक्चुअली। इट वाज गोइंग अप बट देन इट्स बेसिकली डाइड डाउन। Still might do well. We don't know. And people actually did view it, so looks good and came from the shorts feed, not from browse features. So थोड़ा सा ध्यान रखना। Unique viewers 20. What? That's it? बाकी किसने देखे? Like अच्छा, सब्सक्राइबर्स ने देखे होंगे। चलो, not bad. Average view duration was 30 seconds for a 40-second reel. That's not bad at all. Things are looking good. 3.9 watch hours भी मिल गया उससे। I'm happy. I'm a happy guy. Watch time from subscribers 12%. Watch time from people who didn't subscribe 88%. Top geography is India, not surprising. India and Bangladesh. Oh my god, Albania have a chance here. 3-on-2. Needs the perfect cross. The worst cross possible has been delivered and England has cleared comfortably. This is this is where England is making a mistake right now. And they have to be extremely careful.
ओह सॉरी। ओ वो आइडिया वाले में ही डाला है ना। मैं अपने यूट्यूब स्टैट्स में खो गया था। हाँ। You should know happen quickly how Panama defeated yourself. Oh yeah, that's a fantastic idea. And Mexico beat Canada and they're in the कौन क्या कैफ कहते हैं, कौन सा कैफ कहते हैं, जो भी कहते हैं, they're in the final of that. And Panama beat USA. So it's going to be Panama versus Mexico. I think that should be a fantastic idea. चलो ठीक है. And that happened yesterday, right? Maybe I'm a little bit late on the thing. Maybe I should have made it yesterday itself. कल ही रिकॉर्ड करके बना देता तो अच्छा रहता, पर चलो ठीक है. That's an excellent idea, and I think I will go with it. That's a fantastic idea. Thank you. Oh wow, we have another member in our Discord. We're up to 38 people in our Discord now. That's interesting, nahi? When? March 22nd. That's today. Someone joined our Discord today. Welcome, welcome. And what role do you have? ISL role. Interesting. I mean, how are we providing roles? I mean, do they select the role on their own? Or do we give it to them? Like, यश को तो मैंने दिया है. I gave Yash a lot of roles. Like, मैंने उसको प्रीमियर लीग का भी दे दिया, ला लीगा. आई थिंक बंडस लीगा का बनाना चाहिए ना. यश इज अ बंडस लीगा फैन. आई थिंक वो भी एक रोल बनाना चाहिए. रितिन भाई इज हियर. विकी इज हियर. विकी के पास कौन सा रोल है? प्रीमियर लीग. चलो, डिसेंट. रितिन ऑल्सो प्रीमियर लीग. डेविल जोरो. प्रीमियर लीग एंड ISL. इचीरो. प्रीमियर लीग, ISL, सीरिया, ला लीगा. एंड देन द कृष्णा नायक जो डिस्कॉर्ड डिलीट कर दिया. चलो. If I get something more trendy about football, we'll forward that as well. That's perfect. Yeah, they can choose if someone joins the server, but they will get a pop-up. They will get a pop-up about choosing what they want to talk about. So fair enough. I mean, I'll be very honest. This looks like same old England to me. I don't see what the big difference is, except I'm really happy that Miles Lewis Kelly has scored. Besides that, they look vulnerable at the back, and I just don't see what the difference is exactly. They're playing pretty much the same old way, creating a lot of chances, not converting them. That's very English. The other most English thing for an English football team to do is losing on penalties. Declan Rice, Bellingham shoots, blocked, comes to Kyle Walker, puts it back. हाँ, धीरे धीरे होएगा मैन. एवरीथिंग हैपन स्लोली. आई हैव रियलाइज्ड ये एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं. So we have a lot of time. The fact that we are in this position right now, I think we're in a very good position. We're in our 6th month of creating content. We've hit 1,000 subscribers. We're at 2,748 watch hours, which means we are very close to applying for monetization. So I think we've done a pretty decent job. But this is just the start. This is like the minimum requirement. So
Anthony Gordon has come on for England. This is going to be interesting. So this is just the start, and there's a long, long way to go. And I'm sure we will get there. I'm absolutely confident. I think we are creating good stuff. I think the way that we're presenting is very, very decent. It's not the best quality, but we will get there. We will get there. We do have engaging people on our YouTube, which is all that you can ask for. But it'll happen more and more. आज यश नहीं आया, सो गया होगा आज यश. In fact, it's my fault, to be very honest. I only told him that we will be doing the stream tomorrow because I did not realize that. I thought England's game against Latvia is the first game for Thomas Tuchel. But then when I checked it today, I realized that it's actually tonight. So at the last minute, I decided to create the stream and just go for it. Just have some fun with it. Chalo. 76 minutes have been played. This has been quite a decent game, actually. Although I'm surprised that England are only winning by 1 goal to nil, and that goal has also been scored by Miles Lewis Kelly of all people in his debut game for England. I think he's going to finish playing all 90 minutes. Jared Bowen, Kyle Walker, Declan Rice, not the best cross. Harry Kane has caught it perfectly. He scores 2-0. I think that was a mistake that has to be chalked down to a defender's mistake. He was marking Harry Kane, and he made a crucial mistake in marking Harry Kane. Is you When you are ahead of Harry Kane, you need to make sure that you're clearing the ball. If you miss it, Harry Kane's gonna trap it. His first touch was good. His trapping was good, and his finishing was quite fantastic. Let's quickly have a look at this game. Kyle Walker plays it to Declan Rice. Declan Rice, initially I thought it's not the best cross, but हाँ डिफेंडर की गलती थी. डिफेंडर ज़्यादा जल्दी उछल गया, and it's an excellent finish at the end by Harry Kane. 2-0 England, comfortable victory at the end. Just as I was saying that I'm surprised that England haven't scored more in this game, although they've created so many chances. This finish was fantastic. Straight into the far post. Really good finish. 2-0. That's it then. I think now they can start making their subs and everything. Was that? I think this squad did better than the more talented one. What, English squad? किस squad की बात कर रहे हैं हम? Which was the more talented squad? I mean, I think कि regulars ही तो खेल रहे हैं यहाँ पे. Except MLS has a debut, Dan Burns. I think that's his first game as well.
Strakosha has gone down. I think it's a head injury, so they're gonna have someone come and look at him. While they're checking him for an injury, I'm just gonna go quickly to the toilet. मेरे को बहुत time से आ रहा है. 1 second, I'll be back. Ah, Jordan Henderson is coming on for England. I think he's at the twilight moment of his English career. यार आज रील कैसे बनाऊंगा? आज ही मैंने अपने बाल शैम्पू करे हैं, नहीं गिरते रहते हैं. I think it's okay. We'll manage it. इसलिए क्यों रही है? आज ही तो शैम्पू करा मैंने. This 2020-2024 England squad did fairly better than 2006 England. Yes. Very true. 2006 England was a good team, really good team, but for some reason they turned out to be a joke. Lost to Portugal in those penalties. That famous Ronaldo winking moment happened there. Basically, England has been the own architect of its demise. England has been the architect of its own demise. That is the line. So, yeah, I'm not really surprised. Arguably the best team talent-wise and worst chemistry-wise. Yeah, very, very true. And they lost to an average Portugal side, Not, I mean, it wasn't the best Portugal side ever, but for the Portuguese, it was really, really good because they managed to kick England out of the World Cup. Even in 2002, architect of their own demise, that Ronaldinho free kick, David Seaman, pata nahi kahan, no man's land mein tha. And then he had to like jump back, and you can't do that stuff against Ronaldinho. Oh man, what the hell are you thinking? And to think that England actually scored first in that game. Horrible. What was that, man? David Seaman, what are you doing? England had a decent squad that time. And they had a good, decent World Cup, but Brazil के against रख दिया बुरी तरीके से. Michael Owen was in prime form. 1990 में था इटली में वर्ल्ड कप, या 1990 नहीं 1994 में तो यूएस में था. 1990 में अगेन क्रिस वॉडल. व्हाट वाज दैट पेनल्टी? व्हाट द हेल वर यू डूइंग? एंड मतलब ये ना इंग्लैंड वाले बहुत अपने आप को बहुत बनते हैं, स्पेशली वो जो पुरानी टीम्स थी इनकी 1990s वाली, ये लोग इनको हीरो माना जाता है. दे वर द बिगेस्ट हीरोज ऑफ इंग्लैंड एंड दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ देमसेल्व्स. ये क्रिस वॉडल को देख लो. I mean, if you look at that penalty that he had taken in 1990, he was like a schoolboy. He was like, yeah, I'm not playing in the World Cup. I'm Chris Waddle. I can do anything I want. And he just blasted it like didn't even matter. And horrible attitude. And आज भी बस उसका मुंह चलता रहता है. He keeps making these bullshit statements कि Ben White should not be playing in the England squad. Don't call him up. Blah 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 whatever. तो yeah, he just keeps saying a lot of crap. खुद से तो खेला, खुद से तो कुछ जीता नहीं गया. When you have Ferdinand, Terry, Campbell and Neville in your defense and you can't win anything. David Beckham in midfield, prime David Beckham in midfield. Michael Owen, prime Michael Owen as a forward. Who else was there for England?
David Seaman was a half decent goalkeeper for England. For Arsenal, he was fantastic. I mean, for Arsenal, he was fantastic. England also, he was actually quite fantastic. He was quite an iconic goalkeeper, and it was actually surprising that Ronaldinho free kick has become a part of his legacy. It's his own damn fault. Yeah, so he should have jumped. Like he should have jumped, dived, something. It was just like falling behind like that, like he's doing a backstroke in a swimming pool. Owen Hargreaves, Steven Gerrard, and Beckham. Yep. And was Lampard also there? I don't think Lampard was there at that time. But this was a very strong England side. अभी चेक कर लेते ना कौन कौन था. Hmm. David Seaman, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Sol Campbell, David Beckham, Paul Scholes, Robbie Fowler, Michael Owen, Emil Heskey, Gareth Southgate, Teddy Sheringham, Owen Hargreaves, Joe Cole, Nicky Butt, and Kieran Dyer. Not half bad. यहाँ तो नहीं दिख रहा मेरे को. रूनी नहीं दिख रहा मेरे को, और लैम्पार्ड भी नहीं दिख रहा. स्वेन यूरन एरिक्सन वाज द कोच. 23 लोगों की स्क्वाड थी. कीरन डायर, डेविड जेम्स, निकी बर्ट, डरायस वेसल, जो कोल, हार्ग्रीव, शेरिंगम, साउथगेट, मार्टिन कियन, वेन ब्रिज, नाइजल मार्टिन, वेस ब्राउन, एमिल हेस्की, माइकल ओवन, रॉबी फॉलर, पॉल स्कोल्स, डेविड बेकम, सोल कैम्बल, रियो फर्डिनैंड, ट्रेवर सिंक्लेयर, एशली कोल, डैनी मिल्स एंड डेविड सीमन. ये है भाई, विकिपीडिया पे तो ये है. Even Lampard was there, and even Rooney was there. What the fuck is wrong with England? दिखता नहीं है. I think 2006 शायद was, I don't know man, I don't know. यहाँ पे दिखा तो नहीं रहा है. I don't remember Wayne Rooney playing for England then. Rooney signed for Manchester United in 2004. So it's unlikely. And he got his first call up in 2003. For the England. So हो ही नहीं सकता that Rooney is in the 2002 squad. 2004 he signed for Manchester United. 2002 he signed for Everton, and he was in the England national under 19. And 2004 he signed for United. 2003 got his English call up. मैं 2002 की बात कर रहा हूँ ना. 2006 पोर्चुगल वाज डिफरेंट सिनेरियो. 2006 में तो अलग सिचुएशन है. मैं 2002 की बात कर रहा था. When did Lampard join Chelsea? Lampard? That is strange. Lampard joined West Ham in 1995. He joined Chelsea in 2001, and he got his English call up in 1999. But apparently in 2002 he did not play. He's not in the squad.
हाँ यहाँ पे तो था बेकम 2006 तो पता है मेरे को 2006 तो आई नो 2006 तो लैम्पार्ड जेरार्ड हाँ जो कोल रूनी या नो डाउट आई वाज टॉकिंग अबाउट 2002 जब रोनाल्डिनो ने फ्री किक मारी थी एंड डेविड सीमन वाज कॉट एट सी बेसिकली डेविड सीमन को उसके बाद रिटायर होना पड़ा इतनी बुरी सिचुएशन हो गई थी उसके साथ 2006 में डेविड बेकहम के पुतले जलाए गए थे if I'm not mistaken. It was also surprising considering he is their poster boy. Free kick to England. Mhm. 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 Miles Lewis Kelly coming off. Well done, lad. Injury free. Comes back. His parents are proud. Everyone's really, really proud. His grandmom is there. His mom is there. I think his dad is also there. Didn't people burn his jersey because he joined Madrid? No. Uh, People burned his jersey because he picked up a red card uh, while playing for England in the World Cup. When अभी पता लग जाएगा. Why? So in 1998, after he received a red card in the World Cup match against Argentina, leading to England's elimination and sparking widespread anger and blame from the fans. So 1998 के round of 16 match में against Argentina, David Beckham received a red card for kicking none other than Diego Simeone, Mr. Shithouse himself, who had fouled David Beckham and then rubbed his knuckles against Beckham's head. Why am I not surprised with this story? Oh, of course, Diego Simeone was involved. Of course, he was involved. Mr. Shithouse. Mr. Shithouse got David Beckham sent off and then had his own people burn his own. That is peak shithousery. Peak. It doesn't get better than that. Diego Simeone, man. He's been doing it since forever. He knows the game. He knows the game. uh, आई थिंक उसकी डॉक्यूमेंट्री में भी फीचर हुआ था बेकम की एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई थी एंड वहाँ पे भी उसने फीचर किया था डिएगो सिमियोनी को एंड आई थिंक ये कुछ डिस्कशन हुआ था आई एम नाउ स्टार्टिंग टू रिमेंबर अ लिटिल बिट आई थिंक वो दूसरा बंदा है जो हु जॉइन मैड्रिड दैट्स लुइस फीगो जिसकी जर्सी जलाई थी या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इट वाज लुइस फीगो बिकॉज ही लेफ्ट बार्सिलोना एंड जॉइन रियल मैड्रिड दैट वाज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी ऑफ साइड alright this game's pretty much over now uh हाँ yeah I remember that आई नो अबाउट फीगो उसको मारने के लिए उतर गए थे बार्सिलोना वाले या वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी हुई है यार 90s में तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं एंड पेरेज वाज इन्वॉल्व इन दैट वेरी हेवली he wanted the Galacticos and he wanted Figo like, like a spoiled brat who wants the expensive toy no matter what the consequences are actually good for Real Madrid.
How's that? Beckham really got the expensive toy. Messi. Yeah, Beckham really got the expensive toy. समझा नहीं मैं. Anthony Gordon seems injured, and the game's over as well. So England start, and Thomas Tuchel starts his England managerial career with a comfortable 2-0 victory against Albania in the World Cup qualifiers. Miles Lewis Kelly scores his debut goal in his debut game for England, 18 years of age. What a proud moment for him, his family, his fans. I am his fan. And then, of course, Harry Kane made it 2-0 in the 82nd minute, I think. 82nd minute, yeah. And it was pretty much open and shut. England did create a lot of chances in the first half where they should have taken advantage. They should have converted those chances, but they did not. Hence, the score is only 2-0. It could have been 4-0, to be very honest with you. Thank you so much, guys, all those who joined. I think that's going to be it for our stream. Tomorrow, we are going to be doing Spain versus Netherlands, 1:30 in the morning for the UEFA Nations League. चलो see you भाई मैं चला सोने मैं भी I'm just gonna go and I'm gonna start working on making some reels and I'll have dinner first and then I'll work on that. So thank you so much for joining as always. Stay happy, stay healthy, stay safe. See you guys tomorrow night. Bye bye and good night.